हेलो स्टूडेंट्स, अज असी डिस्कस करांगे जनरल लिबेग इंटीग्रल। जनरल लिबेग इंटीग्रल की डेफिनेशन ते जान तो पहला वी नीड द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज़ अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ अ फंक्शन एंड अ नेगेटिव पार्ट ऑफ अ फंक्शन. So let f be a real valued function defined on a set T, then what is a positive part? Positive part of a function is maximum between fx and 0. F positive x is equal to maximum of f of x and 0. So how we'll write f positive of x? Maximum the value अगर असी f positive x दी चेक करना है तो आप डेफिनेशन लिख रहे हैं, इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन एफ एक्स एंड जीरो. कंपैरिजन बिटवीन एफ एक्स एंड जीरो को दो ऑप्शन होंगे डिपेंडिंग अपॉन हु इज़ मैक्सिमम. आंसर विल बी एफ एक्स इफ एफ एक्स इज़ मैक्सिमम and it will be equal to 0 if fx is less than 0. दोनों विचों जो maximum है that will be answer opted by f positive. So it is a positive part. Now you see that कि जेडे साडे दोनों ही आंसर आंदे ने they are greater than equal to 0 because they are in comparison of 0. अगर साडा आंसर fx आ रहा है then fx is positive, 0 आ रहा है then 0 is also greater than equal to 0. This means both the answer, the positive part of fx is positive. The positive part of f of x is positive. Now we define, similarly we define the negative part of f of x. The negative part is defined as maximum of minus f of x and 0. It is the maximum of, again it will have two options. Answer will be minus f of x if minus f of x is positive, is greater than 0. If it is maximum 0 ਦੇ comparison ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ maximum है, and answer will be 0 if minus f of x is negative. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਜਾਵੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖਾਂ, this will imply multiply by negative. This means f of x is negative minus f of x is positive. So f negative ਨੂੰ ਜੋ ਆਂਸਰ ਮਿਲਿਆ, this is the answer and that answer is positive. Minus f of x is positive. The second answer is 0. 0 is also greater than equal to 0. So both the options, दोनों option जेडे f negative part ने लए ने, both the option are positive. So whether we are talking about f positive or f negative, this plus and minus symbol don't indicate that the function is positive or function is negative. ਇਹਦੀ अपनी एक separate definition है. f positive x means maximum as compare with 0. function ਦੀ 0 ਨਾਲ comparison करके maximum answer opt करना है, and f minus x is the comparison of the negative of a function with 0. दोनों cases जेड़ा साडे कोले answer आऊगा, that answer is positive. So we say that the negative and the positive part, they are always positive. f negative x is always greater than equal to 0. f positive x and f negative x both are always greater than equal to 0. Both the answers are always greater than equal to 0. ठीक है जी. Now we will again come back to this definition. We are writing f positive x. f positive x is equal to, आप इस definition ते चलते हैं, it is fx if fx is greater than equal to 0 and it is 0 if fx is less than 0. Now I am writing this definition. f minus मैंने rewrite कर दिया, minus f of x minus f negative is minus f of x if minus f of x is positive and is 0 if minus f of x is less than 0. पहला मैं इसनू चेंज कर लेंदे हैं, then we will multiply this by the negative. इसनू असी लिख सकते हैं that f of x is less than equal to 0 और इसनू लिख सकते हैं that f of x is greater than 0. This is what? This is the negative part of fx. Now multiply this by minus. When we multiply this by minus, what we will get? ਇਹ ਤਾਂ option ਅਸੀਂ ਲਏ ਨੇ depending upon this. जो भी ਇਹਦਾ आंसर है it will be multiplied by negative. ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? fx और ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? 0. ਇਹ fx ਅਸੀਂ ਇਹ वाला आंसर कदों ऑप्ट किया? अंडर दिस कंडीशन. कंडीशन विल नॉट बी चेंज, कंडीशन तो ही रहेगी. ठीक है, जो असी आंसर ऑप्टेन किया है दैट आंसर इज़ मल्टीप्लाइड बाय माइनस. नाउ वी विल ऐड दीज टू वैल्यूज़, दोनों ऐड करते हैं. तो मेरे को माइनस एफ नेगेटिव पार्ट द आंसर आया है, इट इज़ एफ एक्स वैन एफ एक्स इज़ नेगेटिव एंड इज़ 0 वैन एफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0. जदों असी दो फैक्टर्स नू ऐड करते हैं, एफ पॉजिटिव तो माइनस एफ नैगेटिव, तो देखो की आंसर आएगा. कंडीशन जी हैगी असी सेम लवांगे. दिस इज़ अ सेम कंडीशन, एफ एक्स इज़ नैगेटिव एफ एक्स इज़ लैस दैन इक्वल टू 0. ये दोनों वैल्यूज़ ऐड होणगियां, दोनों वैल्यूज़ ऐड हुई तो कितना आंसर बनया? एफ एक्स. इट इज़ अ कंडीशन वैन एफ ऑफ एक्स इज़ नैगेटिव.
ਹੁਣ f पॉजिटिव एंड f पॉजिटिव आ दोनों कंडीशन ऐड होणगियां दोनों कंडीशन ऐड होकर की बन गया fx if fx is positive so what is the answer for f positive part minus f negative part it is equal to f of x so we also write that f positive minus f negative is equal to f positive minus f negative is equal to f and what will be the modulus of f from the same value modulus of f जे अगर देखा जाऊगा तो की बनूगा mod of f will be equal to f positive plus f negative क्योंकि mod of f ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ f ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੈਨ mod of f will be equal to mod ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ mod ਆ ਜਾਏਗਾ ਆ ਦੇਖੋ when we will find the value of the modulus ਸੋ ਮੋਡੂਲਸ ਇੱਥੇ f ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ mod ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ f इज़ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੱਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਮੋਡ f ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ f ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ fx if fx is greater than equal to 0 and 0 if fx is less than 0 दूसरी मेरे को f नेगेटिव है f नेगेटिव का आंसर मेरे को माइनस fx है if minus fx is positive and is 0 if minus fx is negative पहला तो आप इसनू सॉर्ट कर लिए इनू सॉर्ट करके असी की लिखा दैट fx is less than equal to 0 इत्थों की मिले दैट fx is greater आप दोनों फैक्टर्स नू ऐड कर लिए what is f positive fx प्लस f नेगेटिव fx हाउ टू ऐड सेम इनइक्वालिटी सेम च ऐड होएगी यह इनइक्वालिटी इस च ऐड होनी है ये fx इज पॉजिटिव एंड fx इज पॉजिटिव है इत्थे आंसर कितना है fx इत्थे कितना आंसर है 0 so this answer is fx and under the condition when fx is positive now negative and negative वाली inequality इत्थे कितना आंसर है 0 और इत्थे कितना है माइनस fx तो कितना आ गया माइनस f of x if f of x is negative so when we have two options इस तरीके दे जे मेरे को ऑप्शन होन a ते माइनस a ते मैं दोनों नू मिला के एक आंसर लिखना है दैट आंसर कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ a क्योंकि जो अगर मैं इन्होंने दोनों नू मिला के एक आंसर लिखदा दैन ये ओके बिकॉज आंसर ऑफ मॉडुलस fx इज द सेम दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द mod of fx mod of fx is fx if fx is positive and mod of fx is minus f of x if f of x is negative so this is our second formula that when we find modulus of f it is f positive plus f negative and what is f ये भी असी पिछे ऑब्जर्व कर लिया it is f positive minus f negative and असी ये भी ऑब्जर्व करें कि positive part is positive and the negative part of a function is also positive. So these are the basic definitions that will be needed for the general Lebesgue integration. Now we come on to the definition. A measurable function f is said to be Lebesgue integrable over the set E if both the positive part and the negative part of the function are integrable. इत्थे जिहड़ी integrable दी definition है it is same as the previous definition. A function is integrable when its integration is finite. A non-negative measurable function is said to be Lebesgue integrable if the integration is finite, integration is less than infinity. So ਇੱਥੇ भी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they are non-negative. Both the positive and f positive ਤੇ ਜਿਹੜੇ f negative ਹੈ they are non-negative functions. They are non-negative functions. So this Lebesgue integration definition is applicable to the non-negative functions. Function will be integrable provided its positive and negative parts are integrable and the positive and negative part will be integrable when the integration of the positive and negative part is finite. And moreover ਅਸੀਂ f ਨੂੰ f positive minus f negative लिख रहे सी this means integration of f can be further written as integration of f positive part minus integration of f negative. Now let us discuss one example. Let f be integrable function such that f is equal to 0 almost everywhere then the integration of f is also equal to 0. सी यह जी सेम रिजल्ट असी पहला पिछे भी पढ़े होंगे ये चेंज की हो रहा है इट इज़ अ नेचर ऑफ फंक्शन पिछे तुसी मे बी अ फंक्शन विद दी विच इज़ डिफाइन विद ऑन अ मेजरेबल सैट विद अ फाइनाइट मेजर पढ़िया हो या फिर एक नॉन नैगेटिव फंक्शन पढ़िया हो सो नेचर ऑफ फंक्शन जिहड़ा है चेंज होंदा है रिजल्ट असी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इंटीग्रेबल फंक्शन भी जो 0 होंदा है तो उसकी इंटीग्रेशन की आ जाती है 0 के इक्वल सो सपोज दैट एफ इज़ इंटीग्रेबल फंक्शन
when f is integrable, ये असी definition देखी है कि this is if and only if part, whenever the function is integrable then positive and negative part are integrable, and whenever positive and negative part are integrable then the function is also integrable. ठीक है, so due to that definition, f is integrable then f positive and f negative both are integrable. This integration and this both integrations are finite, क्योंकि integrable होने का मतलब कि ये integration should be less than infinity. Now it is given that f is 0 almost everywhere, so f is 0 almost everywhere, then f positive part is equal to 0 almost everywhere and f negative part is equal to 0 almost everywhere. अगर f जिहड़ा हैगा है साडे कोले 0 हैगा है तो f नूं असीं f पॉजिटिव असी मॉडलस ऑफ f की अगर गल करिए तो ये बनूगा f पॉजिटिव प्लस f नैगेटिव. इफ f इज़ इक्वल टू 0 दिस मीनस मॉड ऑफ f इज़ 0. इफ f इज़ 0 दिस इंप्लाइज जो भी वैल्यू 0 होंगी वह मॉडलस भी 0 होंगे. दिस मॉडलस इज़ इक्वल टू 0. मॉडलस इज़ f पॉजिटिव प्लस f नैगेटिव. ये जी वैल्यू हैगी है ये इट सैल्फ की है, इट इज़ अ नॉन नैगेटिव वैल्यू. f पॉजिटिव इज़ पॉजिटिव. What is f negative? It is also positive. We are adding two positive values and their answer is 0. दो positive values add कर रहे हैं but answer कितना आ रहा है 0. This means both the values are 0. This will give us that f positive भी 0 है and f negative भी की हैगा 0. So I will repeat, when f is 0 this implies mod of f is 0. What is the modulus of f? It is f positive plus f negative. Mod is 0, this means f positive plus f negative both are 0. f positive is positive, f negative is negative, positive. दोनों ही positive values का sum 0 है तो दोनों individually की नहीं 0. इस करके whenever f is 0 the positive part and the negative part both are 0. इत्थे हुण पॉजिटिव पार्ट 0 हो गया तो उत्थों असी इंटीग्रेशन नू 0 तो एफ नैगेटिव पार्ट 0 उत्थों इंटीग्रेशन नू 0 किवें कहता, क्योंकि असी फॉलो कर रहे हैं नॉन नैगेटिव फंक्शनस वाला पार्ट. इत्थे जिहड़ा साडा चल रही है एग्जाम्पल इट इज़ अबाउट दी इंटीग्रेबल फंक्शनस. सो पिछे असी यही सेम रिजल्ट कि वैन दी फंक्शन इज़ 0 दैन इट्स इंटीग्रेशन इज़ 0 वाला पार्ट किया फॉर अ नॉन नैगेटिव मेजरेबल फंक्शन. If f is a non-negative measurable function, whenever a function is 0, its integration is 0, and whenever integration is 0, function is 0. This is for the non-negative measurable functions. क्योंकि साढ़े f positive ते f negative non-negative functions ने f positive and f negative, f positive comma f negative, they are non-negative functions. So that result is applicable to these. Whenever a function non-negative function is 0, then its integration is 0. दोनों इंटीग्रेशन 0 है then their subtraction is also equal to 0. this means integration of f भी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी. Let us move on to the next example. Show that if f is integrable on e then modulus of f is integrable on e. Mod of f भी integrable होगा and the modulus of the integration will be less than integration of the modulus. So ये भी चेक करना है कि whenever the mod is integrable does it imply the integrability of f? f is integrable then mod is integrable. If mod is integrable whether f will be integrable. So suppose what is given that f is integrable. Now we will use the general Lebesgue integration. If f is integrable the positive part and the negative part are integrable. Gradually असी इत्थे तक पहुँच गए कि Lebesgue integration का मतलब है इंटीग्रेबल ਉਹਦੇ पॉजिटिव ਤੇ नैगेटिव पार्ट ਦਾ इंटीग्रेबल होना. तो असी ये देखा कि ਜਿਹੜੇ पॉजिटिव ਤੇ नैगेटिव पार्ट होंगे ने दे आर नॉन नैगेटिव फंक्शन. तो नॉन नैगेटिव फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन ये यूज़ होगी. नॉन नैगेटिव फंक्शन इंटीग्रेबल तो होंगे जो उसकी इंटीग्रेशन की आती है फाइनाइट. सो असी एफ नू इंटीग्रेबल किया. जनरल Lebesgue इंटीग्रेशन की डेफिनेशन फॉलो करिए दिस दैन एफ इज़ इंटीग्रेबल. एनी फंक्शन इज़ इंटीग्रेबल इफ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स आर इंटीग्रेबल. Positive and negative part are what? They are non-negative functions and a non-negative function is integrable when its integration is finite. जे दो integrations finite है what will be their sum? Sum is also finite. Sum of two finite values is finite. And इत्थे असी non-negative functions की property use कर रहे हैं कि जदों असी दो non-negative function we are using that integration of f plus integration of g. It is equal to integration of f plus g. सो ਜਿਹੜੀਆਂ दो सैपरेट इंटीग्रेशनस ने दे कैन बी कोलैबोरेटेड. उन्होंने इकट्ठा कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ एफ प्लस प्लस एफ माइनस. एंड व्हाट इज़ एफ प्लस एफ माइनस? एफ प्लस एफ माइनस इज़ द मॉडुलस ऑफ एफ. सो इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एफ भी की बन गया लेस दैन इन्फिनिटी. दिस मीन्स मॉडुलस ऑफ एफ की हो गया इंटीग्रेबल. कन्वर्सली
Conversely, suppose that mod f is integrable, we want to see that whether the converse of the result is also there. If ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ follow ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ whenever f is integrable the modulus is integrable, what about the converse? If mod is integrable, whether f will be integrable? Now suppose modulus of f is integrable. If modulus of f is integrable, integration ਦੀ ਜਿਹੜੀ definition ਹੈ, it follows that the integral will be finite. So integration of mod of f will be finite. Now write the modulus of f as f positive plus f negative. This integration is finite. We can use the integration term by term. ਇਹ integration term by term होगी. ਇੱਥੇ ਕੀ observe ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ this function is non-negative function. This function is non-negative function. ਇਹ non-negative function ਦੀ ਜਿਹੜੀ integration ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ non-negative. ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ function ਹਮੇਸ਼ਾ positive ਰਵੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਦਿਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਫ ਆਵਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਮ ਬਣੂਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦਿਸ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ. ਦੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਮ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੋਥ ਆਰ ਫਾਈਨਾਈਟ. This integral and this integral both are finite, and when the two integral are finite we say that f positive comma f negative they are integrable. They are integrable. And ਜਦੋਂ f positive ਤੇ f negative integrable ਹੁੰਦੇ ਨੇ we say that function is also integrable. So this way the result will be there. So whenever f is integrable then the modulus is integrable, and whenever modulus is integrable then f is also integrable. It is both way the result is there. Now we will move on to prove the part of the modulus of integration of f is less than equal to integration of the mod of f. So we know that every function is less than equal to its modulus, minus of the function is also less than its modulus, and whenever f is less than equal to g ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ integration perform ਕਰ ਦੀ. integration of f will be less than equal to integration of mod of f, and integration of minus f is also less than equal to integration of mod of f. ਇਹ ਜਿਹੜਾ scalar ਹੈ can be taken outside of the integration. So again rewriting the result, पहला result बन गया integration of f is less than integration of mod of f, and दूजा बन गया minus the integration of f is less than equal to integration of mod of f. इस part ਨੂੰ combine करके one statement लिखनी होवे then we can say that modulus of integration of f is less than integration of mod of f, because mod will be either positive or either negative. So this will prove our result. This means modulus of integration of f is less than integration of mod of